Assalamu alaikum. We are live from the TheListener.pk's account. I hope you all are doing well. हमारा जो आज का लाइव सेशन है, it is going to be about impact of mere words on one's mental health. तो हम बात करेंगे किस तरह से लोगों की बातें, किस तरह से लोगों के वर्ड्स, सिंपल फ्रेजेस जो होते हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं. फर्दर मेंटल हेल्थ की वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी पर्सनल लाइफ किस तरह से इम्पैक्ट होती है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट विद आवर टुडेज स्पीकर. हमारे जो आज की साइकोलॉजिस्ट हम उनके साथ डिटेल में ये सारी बातें डिस्कस करेंगे. For the people who are new to TheListener.pk, TheListener.pk is a 24/7 available mental health line. हम mental health के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, हम थेरेपीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं और हर सैटरडे को, हर वीक के सैटरडे को वी प्रोवाइड फ्री थेरेपी सेशंस. So if you want to avail that, you want to avail a free therapy session which is tomorrow, Saturday को, you can drop us a message with your name and your number and we'll instantly book a session for you. So you can do that as well. और अगर टॉपिक से रिलेटेड, हमारा जो आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ मेयर वर्ड्स ऑन वंस मेंटल हेल्थ, अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन लीव देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड वी आर गोइंग टू आंसर देम एट द एंड ऑफ द लाइव सेशन. तो फॉर द पीपल हु आर जस्ट जॉइनिंग इन, हमारा जो आज का लाइव सेशन है, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट इम्पैक्ट ऑफ मेयर वर्ड्स ऑन अ पर्सनस मेंटल हेल्थ. के आपकी जो बातें लोगों की होती हैं, लोगों के कहे हुए जो वर्ड्स होते हैं, उनकी आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से वो आपको मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं और फर्दर आपकी पर्सनल लाइफ पे भी उनका इम्पैक्ट होता है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट विद आवर टुडेज साइकोलॉजिस्ट. और जैसे वो हमें ज्वाइन करती हैं, हम इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे. इफ़ देयर इज एनीथिंग एल्स, इफ़ देयर इज अ क्वेश्चन यू हैव for TheListener.pk, please drop them in the comment box below so that we can answer that for you. And we offer free therapy sessions every Saturday. तो अगर आप free therapy session avail करना चाहते हैं तो you can just drop us a message regarding that अपने number के साथ, मोबाइल नंबर, contact number के साथ और अपने full name के साथ, or one of our representatives is going to contact you. So I do see our today's psychologist over here. I'm going to send her a request so that we can get her in the session. All right. And for the people who are new, हमारा आज का जो लाइव सेशन is going to be about impact of mere words on a person's mental health. कि आपकी mental health के ऊपर लोगों की बातों का क्या असर है. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. How are you? I'm good. How are you? I'm doing fine, alhamdulillah. All right. Shall we start? I guess there's some sort of problem with the angle of the camera. 1 second. Alright, for the people who are just joining in, हमारा आज का जो live session it is going to be about impact of mere words on a person's mental health. तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर के वर्ड्स जो होते हैं, लोगों की जो बातें होती है, उसका आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. Alright, Is it fine now? Yes, it's fine. Yes. Alright, so Zahra over here, she's a clinical psychologist and a co-founder of Clinical Conversation. Thank you so much for joining us today, Zahra. If there's anything you would like to add in your introduction, please go ahead. Welcome. Thank you so much for introducing me, and thank you for having me in this beautiful platform. I have listened to a lot of live sessions from your platform before, and they were amazing and very knowledgeable. So whatever you're doing it's changing lives, and it's great. खास तौर पे आजकल के दौर में free sessions on Saturday कोई नहीं देता है. So that's very great. So we'll start with this session since a lot of people have joined already. Yes, definitely. Alright, so Azhar, so let's start with very basics. Why do we feel that words are very powerful? What impact do they have on one's life? Well, it's about जो भी हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपने लिए या किसी और के लिए, वो हमारा परसेप्शन, हमारे थॉट्स और हमारी रियलिटी बिल्ड करना शुरू हो जाता है. इमेजिन आपके कितने बहन भाई हैं? एक भाई है और आप दोनों एक ही घर में
हमेशा से रहे हो, एक ही तरह का खाना खाए, एक ही पेरेंट्स हैं, बट घर में अगर कोई भी मसला होता होगा या बहुत खुशी का मौका होता होगा, आपका एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, उनका एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, लिविंग इन द सेम एनवायरनमेंट, एक ही तरह की नर्चरेंस है, बट या द रिस्पॉन्स इज डिफरेंट। इट दैट इज बिकॉज जो हमारा परसेप्शन है वो घर से बन रहा है, बाहर से बन रहा है, टीचर से बन रहा है, पर्सनल प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट से बन रहा है, एंड दैट इज टोटली बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और उसके अंदर आते हैं फिर वर्ड्स। इट कैन बी द विक्टिम लैंग्वेज, इट कैन बी द लेजेंडरी लीडरशिप लैंग्वेज। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा जो कहते हैं, ओह मैं बहुत थका हुआ हूँ, पता नहीं क्यों, आई फील सो एग्जॉस्टेड, I can't do this, I hate this, I don't know if I'm supposed to take this risk. बहुत से इस तरह की लैंग्वेजेस आपको सुनने में मिलेंगी अपने घर में भी और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी, बट देन देयर आर सम वर्ड्स इन सम लैंग्वेज and some people, they are so energetic and so full of knowledge, and they are like, I can do it, I will do it, I have to do it. um, Such words are motivating. It changes your entire perspective about life, about how you communicate with other people, and what you're going to do in your life. For instance, अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देख लें, एक विक्टिम लैंग्वेज है जिसने नेशंस को डिस्ट्रॉय किया, एक विक्टिम सॉरी लेजेंडरी लैंग्वेज है जिसने मे बी टेबल कॉन्फ्रेंस पे बहुत बड़ी बड़ी वॉर्स जो है स्टॉप कर दी हैं. देन देयर कम्स a lot of people who have actually worked in the way of humanity. Abdul Satari, the Mother Teresa. It was always about words. It was always about compassion. It was always about being there for somebody by making an eye contact and use the words consciously, जो कि बहुत सूदिंग है, बहुत इम्पैक्ट रखते हैं लोगों की जिंदगी के ऊपर. आई मीन वी डू द सेम थिंग लाइक इन सेशंस. हम जब भी काउंसलिंग के लिए बैठे होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक, आप दवाई तो देते नहीं है तो आप इलाज कैसे करते हैं? दिस इज द वेरी कॉमन क्वेश्चन आज. तो उसमें यही आता है कि जो अल्फाज हैं वो असल में आपके पूरे पर्सपेक्टिव को, आपके थॉट्स को, आपके रवैयों को बदलते हैं. एंड दैट इज व्हाट हैपन इज कि अक्सर लोग जो साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार होते हैं, दे डोंट हैव अ गुड चाइल्डहुड, एंड दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन, मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि आप बहुत यूजलेस हो. My mother was like, I never wanted you, I don't know why it happened and all that stuff. इस तरह के अल्फाज जो उनके अंदर वर्थलेसनेस का एहसास पैदा करते हैं, हेट्रेड का एहसास पैदा करते हैं टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स सोसाइटी. एंड या वर्ड्स हैव अ लॉट ऑफ पावर जिससे हम एक इंसान को completely बदल सकते हैं. Nobody is born criminal, nobody is born angel. It's always about how we change and learn our mind. हाँ, कुछ अरसे तक सोसाइटी का एक इन्फ्लुएंस है हमारे पे, बट नाउ since now at the age from 12 onwards, आपका अपना इन्फ्लुएंस हो सकता है अपनी सोच पे, अपने अल्फाजों पे, एंड यू कैन एक्चुअली चेंज योर इंटायर सेल्फ सिर्फ अल्फाजों से. एग्जैक्टली. तो ज़रा आपने बात की कि हम इंटायर सेल्फ को चेंज करते हैं सिर्फ वर्ड्स की बेस के ऊपर, तो व्हाई डू वी गिव सो मच पावर टू वर्ड्स कि वो हमें इमोशनली इम्पैक्ट करना स्टार्ट? एक्चुअली जो वर्ड्स हैं वो हमारे कम्युनिकेशन में 74% जो proportion है वो कंट्रोल करते हैं. इफ यू हैव स्टडीड अबाउट कम्युनिकेशन, तो उसमें आपको नजर आएगा वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, वो सारी चीजें कंबाइन होती हैं. लेकिन जब हम अल्फाजों के ऊपर गौर करते हैं, आप अक्सर देखेंगे लोगों का सवाल होगा कि उसने मुझे ऐसे क्यों कहा. Like we're so focused on उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, rather than what are we doing about this. हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्यों इस चीज से अफेक्ट हो रहे हैं. It's always about the words, क्योंकि जब हम किसी से कनेक्शन बनाते हैं, the first step is about words. It's about listening, it's about using what sort of words you use. Also हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोगों का दिल दुखा सके, हम उनके अंदर गिल्ट पैदा कर सके, हम उनको बीमार कर सके, बिकॉज ऑफ XYZ रीजन.
और कुछ लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वो अगले इंसान को कामयाब करना चाहते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी से और बीमारी से निकालना चाहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि काफ़ी लोग अपने आप को लेबल कर देते हैं ऐसे, बाय द वे। फॉर इंस्टेंस आजकल काफ़ी एक ट्रेंड चला, ओह यू नो आई एम डीलिंग विद ओसीडी, और मुझे बहुत ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इट्स नॉट अ जोक, it's not a label, it's a clear diagnosis, but people they take the word and label them, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी पर्सनालिटी उसी के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाती है, बिकॉज वी आर ट्राइंग हार्ड टू प्रूव दैट। ठीक है। ठीक और है। जब हम एक इंटरेक्शन में बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज अबाउट यू नो हाउ गुड यू आर विद योर कम्युनिकेशन एंड योर वर्ड्स, तभी आप अगले इंसान से इंटरेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज वो जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होगा, रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, and it is the power you know we can get in contact with the other person, it's through the words. ऑलराइट, तो ये तो बात होगी हमारी इमोशनल इम्पैक्ट। अब वर्ड्स का हमारी पर्सनल लाइफ पे भी कोई इम्पैक्ट होता यस डेफिनेटली। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं या हमारे टीचर्स हमारे लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है। वैसे ही जो अल्फाज हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम पे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस वी सी द वर्ल्ड नॉट एज इट इज, बट वी सी द वर्ल्ड थ्रू आवर लेंस। हमारी जो थॉट्स है ना, वो हमारे अल्फाजों की लेंस के साथ चेंज होती रहती है। फॉर इंस्टेंस इफ आई टेल माई सेल्फ आज मैं जल्दी उठ जाऊंगी और मुझसे ये काम करना है और मैंने ये करना है और मैंने वो करना है, and they are like words and they are in my thoughts and they are like I'm reinforcing them again and again and again. There will come a time जब मैं उसको वाकई इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूंगी, and there will become a time जब मैं उस फिल्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग और लेजेंडरी और लीडरशिप और डोमिनेटिंग और कॉन्फिडेंट बनाती चली जाऊंगी। एंड देन देयर कम्स पीपल, दे आर लाइक मुझसे नहीं होगा, आई कैन नॉट सोशलाइज, आई कैन नॉट गो इन सोशल सिचुएशंस एंड आई कैन नॉट डू दिस, आई जस्ट कांट, आई जस्ट डोंट हैव दैट इन मी, मुझसे नहीं हो सकता, पता नहीं मुझसे क्यों नहीं होता है। एंड देन ब्लेमिंग रिलीजन, गॉड, सोसाइटी, एनी अदर एक्सक्यूज बट नॉट सेल्फ। तो हम अपने आप को बार बार रिकॉल करवा रहे हैं अपने अल्फाजों के थ्रू कि हम नहीं कर सकते। वो हमारी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। एंड देन सम पीपल टेलिंग यू टेलिंग योरसेल्फ कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मुझसे होगा, एंड दैट एक्चुअली हैपेंस, इट एक्चुअली हैपेंस, आई हैव डन दैट लॉट मेनी टाइम। जब मैं अपने आप को कहती हूँ ना कि नहीं मैं नहीं कर सकती, अभी अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, एंड उस दिन चाहे आपने कुछ भी ना किया हो, कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुई, आपसे नहीं होगा। बट द मोमेंट यू टेल योर सेल्फ, there were days I've been working continuously for hours, and I just told myself I can still go on. I still have the energy to do that, and I'm going to do that. And amazingly, वो दिन बहुत productive, बहुत अच्छा है. Like it is always like completing so many tasks, socializing, investing, everything, and sleeping perfectly fine that day. So it's always about how you tell yourself about yourself. It does have a lot of impact. क्योंकि अक्सर आप लोगों को सुनेंगे इवन इन द सेशंस, अक्सर क्लाइंट्स अपने आप को रेफर करते हैं एज a person who is not good, as a person who is weak, does not have the authority, and they are like, we don't have control of our life and our decisions. But also जितना वो दुनिया के बारे में बताते हैं कि दुनिया ने उनके ऊपर कितना जुल्म किया है, उससे ज्यादा जुल्म उनके अल्फाजों में उनके लिए होता है। सबसे पहला टास्क मोस्टली मैं अपने क्लाइंट से कराती हूँ कि हु आर यू, आप कौन है, लाइक हाउ वुड यू डिफाइन योर सेल्फ, एंड इट्स बेस्ड ऑन वर्ड्स। और मोस्टली लोगों का इमेज is about pain, it's about losing someone, it's about very prominent feature of the physical appearance or their mental health that is triggering for them already, and it starts from there. For instance, I am ugly. For instance, I was always a failure. That's how they start. And that's, you know, is very shocking. And when they read it out loud, it actually is like, this is my point of view for myself and not the world's. तो ठीक सारी जिंदगी हम लोगों के अल्फाजों के लिए परेशान होते हैं. It's mostly about your words for yourself. ठीक हो गया. तो ज़ारा, व्हाट आर सम ऑफ द नेगेटिव जो हम आम रूटीन में बहुत ज़्यादा सुनते हैं?
आम रूटीन में यार, लाइक आई टोल्ड यू, मैं बहुत थका हुआ हूँ। और ये आप देखेंगे कि ये एक ऐसी चीज काम करती है जैसे कि it's like a frequency of words, the power of words and thoughts connecting together. For instance, आप काम से घर जा रहे हो और आप एंटर होते साथ कहते हो, ओह आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थकी। आपकी मम्मा कहेंगे हाँ बहुत थकी है मैं। आप आपके पापा आएंगे पूछेंगे तो वो आपकी मम्मा कहेंगी नहीं ये बहुत थकी हुई है आज ये। और वो एक दो तीन और फिर कोई बच्चे आएंगे घर में, कोई और आएगा, गेस्ट आएंगे, चाहे तुम जाके रेस्ट करो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, तुम तो बहुत थकी हुई हो। सो अपेरेंटली आपकी बॉडी, आपकी मेंटल हेल्थ, इट इज थकी हुई। ठीक है, ठीक हो और गया। आप वो थके हुए इंसान बन गए, हालांकि आप थके हुए नहीं थे। इट वाज जस्ट एक एक सेकंड की फील थी वो, एक मिनट की फील थी वो, बट इट वाजंट द रियलिटी ऑफ यू, बट वो आपकी एक रियलिटी बन गई। और एक इंसान से 10 लोगों ने वो बात, थका हुआ थका हुआ थका हुआ थका हुआ, और एक सर्कल पूरे घर का बन गया, टायर्ड 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 टायर्ड। It actually is the frequency of words that controls you and have impact on you to an extent कि आप नेगेटिवली भी चेंज हो जाते हो, पॉजिटिवली भी चेंज हो जाते हो। नाउ फॉर इंस्टेंस हाउ वी कैन चेंज दैट। अपने घर आए, इवन दो यू आर टायर्ड एंड कोई आपसे, आपको बॉडी लैंग्वेज को देख रहा है, आपको देख रहा है, आप थके हुए हो एंड यू आर लाइक नो आई एम डूइंग परफेक्टली फाइन। और आगे से वो कहे नहीं आर यू श्योर, एंड यू आर लाइक यस आई एम डेफिनेटली श्योर एंड आई एम डूइंग perfectly fine. In fact, I had a really nice day, a very productive day. तो उसके बाद से ओह अच्छा, और फिर आपकी पूरी थॉट 1 घंटे में 2 घंटे में वही सर्कल चलेगा, but then again oh she had a very productive day, oh tell me about your day, what did you do, and your facial expressions, your energy, it entirely changes. It's always about small phrases in your life. I am stressed, एक और चीज थके हुए को टायर्ड और एक स्ट्रेस बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी सोसाइटी में, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। और स्ट्रेस को हमने एज अ कंपटीशन ले लिया। इट्स लाइक फॉर इंस्टेंस आपने सुना होगा कि ओ डॉक्टर्स की जॉब तो बहुत स्ट्रेसफुल होती है, डॉक्टर्स तो बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। हु सेड दैट? Every job can be stressing and every job can be relaxing. It's always about how you are doing in that job and how you feel about, आप उसके लिए कितना कमिटेड हो और कितना गोल ओरिएंटेड हो किसी भी चीज के लिए। बट अगेन इट्स ऑलवेज अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। और हमने उसको भी एक हाई फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया है और उसको एक रियलिटी बना दिया है कि जो इंसान स्ट्रेस्ड नहीं है उसकी जिंदगी में कोई मसला है। क्यों? आप काम कर रहे हो तो आपका स्ट्रेसफुल होना जरूरी है। इफ यू हैव अ फैमिली, आपका स्ट्रेसफुल होना जरूरी है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपका स्ट्रेसफुल होना जरूरी है। इफ यू आर गोइंग थ्रू एनीथिंग इन योर लाइफ और आप स्ट्रेस नहीं हो तो आप नॉर्मल नहीं हो। सो वी टुक इट एज एग्जैक्टली। लाइक दैट। इस ठीक हो तरह गया। से यस, बहुत से कॉमन फ्रेजेस हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। ठीक हो गया। सही, अब ये बात हो गई हमारी नेगेटिव फ्रेजेस की और जो हम यूज करते हैं अपने लिए। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव फ्रेजेस की, और हम ऐसे क्या पॉजिटिव वर्ड्स, ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस या फ्रेजेस यूज कर सकते हैं किसी और के लिए दैट कैन इम्प्रूव द डे, मतलब उनका पूरा डे, उनका पूरा मूड इम्प्रूव करने के लिए। व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव फ्रेजेस वी कैन यूज? You are amazing. You're really good at that. I really like your outfit and the change of colors. Um, the way you presented today, it was amazing. Even, अगर हमें किसी के काम में कोई गलती भी नजर आती है, instead of saying them, I made some correction in your work and you need to improve in this and this um, thing, उसके बजाय आप ये कह सकते हो कि मैंने कुछ modifications की हैं, and let's study together how that fits in with your presentation or your work or your case, anything. It is about a language that can make you or that can destroy you. For instance, टीचर्स जो है हमारी सोसाइटी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अक्सर बच्चे अपने आइडल्स पेरेंट्स से स्विच करके टीचर्स की तरफ जाते हैं। एंड अगर कोई टीचर कहे कि आप बहुत नालायक हो, मैंने आप जैसा नालायक बच्चा तो दुनिया में देखा ही नहीं और आप कर ही नहीं सकते हो, आपसे तो कभी भी नहीं होगा, एंड दैट इज द सिचुएशन दैट ब्रेक्स द चाइल्ड। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी सिचुएशन, हमारी जनरेशन और हमारे से पहले की जनरेशन में ये चीजें फेस की। आई डोंट नो अभी भी होता होगा लेकिन कम है कंपैरेटिवली फ्रॉम बिफोर, बिकॉज यस अवेयरनेस, बट ऐसा बहुत होता है। देयर वाज अ चाइल्ड जिनके फादर
अल्कोहलिक थे और मदर क्लिनिकली डिप्रेस थी एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट चाइल्डहुड, और उनके सिबलिंग्स और उनको बहुत मारा जाता था, फिजिकल वर्बल अब्यूज। और उनके फादर हमेशा उनको कहते थे कि आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते, यू आर यूजलेस, आप बेकार हो, anything to hurt him. And one day his teacher was like, you can express your thoughts through words in poetry. And it was about that day he found out कि ये जो पोइट्री है उसके थ्रू मैं जो वर्ड्स यूज करूंगा, आई कैन एक्सप्रेस माई पेन, आई कैन एक्सप्रेस हाउ आई फील डीपली इनसाइड, एंड that day it changed for him. And what other thing happened for him was कि जब वो पोएम लिख रहे थे उनकी टीचर ने ऑब्जर्व किया और पढ़ना शुरू किया, एंड देन she told him that आपने जो लिखा है that is amazing and you are very good at it. जो सारी जिंदगी वो सुन रहे थे अपने पेरेंट्स से, उस चीज को क्रैक, इट वाज द क्रैक देयर, द पैटर्न ब्रोक देयर, उनकी टीचर ने जब अपने अल्फाज चेंज किए। तो इसलिए बहुत जरूरी है हम हर दिन अपने साथ कॉन्शियसली अपनी कन्वर्सेशन में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें दैट हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल लाइफ rather than negative impact on their life. For instance, telling them what they are not good at, we should be telling them what they are good at. For instance, अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को ये भी कहती हूँ, वो कहते हैं ना कि मैडम मैंने तो ये सोचा था कि मैं अपने फूड कंट्रोल करूंगा और मैंने हेल्दी खाऊंगा, और मैं अपने आप को बताता हूँ कि मैंने जंक फूड नहीं खाना है, मैंने जंक फूड नहीं खाना है, लेकिन फिर भी बाय द एंड ऑफ द नाइट आई ईट समथिंग। तो एक बात है दैट इज लाइक रीफ्रेजिंग अगेन एंड अगेन। फॉर इंस्टेंस, मैं अभी आपको कहूँ कि यू डोंट थिंक अबाउट द रेड कलर कार, आपके जहन में क्या आ रहा है? रेड कलर की कार। वी आर टेलिंग आवरसेल्व्स कंटिन्यूअसली कि हमने उसके बारे में नहीं सोचना, आप उसी के बारे में सोचोगे। सोच व्हाई आरंट वी टेलिंग आवरसेल्व्स कि थिंक अबाउट द ग्रीन कार, think about eating healthy. For instance, मुझे डाइट करनी है, नो आई हैव टू लिव हेल्दी। मुझे इतनी देर गाड़ी चलानी पड़ेगी, ओ द वेदर इज गुड, आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस माय ड्राइविंग स्किल्स। मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी बिकॉज आई हैव बीन आस्क्ड टू डू दैट, आई हैव टू डू दिस बिकॉज आई हैव कंट्रोल ओवर माय फिजिकल सेल्फ एंड आई कैन चेंज माय बॉडी द वे आई वांट टू। That's how you change. It's always about क्या करना है rather than क्या नहीं करना है, उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। It's about मुझे क्या करना है उसके ऊपर फोकस करना है। A lot of people, जैसे मैंने अभी फूड की बात की, it's like हम हेल्दी खाना चाहते हैं और हम हेल्दी नहीं खा पा रहे, ऐसा क्यों होता है? इज बिकॉज वी आर टेलिंग आवरसेल्व्स कि हम डाइट पे हैं, हमें पतला होना है, हम कम खाना है, हमें ये नहीं खाना है, हमने वो नहीं खाना है, तो आप अपने आपको नो 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 करते रहो। सेम इज द केस विद डायबिटीज पेशेंट। आई मीन कोई ऐसा डायबिटीज का पेशेंट नहीं है जो आपको फ्रिज के अंदर रात के 2 बजे छुपा हुआ नहीं मिलेगा और कुछ मीठा खा रहा होगा। एवरीबडी डज दैट। खासतौर पे ओल्ड एज में बहुत ऐसा होता है। दैट इज बिकॉज कि सोसाइटी उनको हर दिन कह रही है नो 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 नो। व्हाई डोंट वी कंट्रोल द पोर्शन एंड व्हाई डोंट वी टेल देम? आप डायबिटीज के पेशेंट की लिस्ट भी देखेंगे ना, उनको चार्ट दिया जाता है आप क्या नहीं खा सकते। उनको ये चार्ट देना चाहिए आप क्या खा सकते हैं। दे आर लाइक आप ये देखें, आप हमें बताएं कि हम मर जाए, हम कुछ भी ना खाएं, अभी क्या है? तो ऑब्वियसली दे गेट अटैक्ड। एग्जैक्टली। इट शुड बी अबाउट कि आपको क्या करना चाहिए rather than क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अब हमने बात कर ली नेगेटिव पॉजिटिव फ्रेजेस की, तो अगर हम आ जाए कोपिंग मैकेनिज्म्स की तरफ कि हाउ डू यू कोप विद दिस ऑल ऑफ दिस, कि अगर आपको किसी के वर्ड से इम्पैक्ट पड़ गया, कोई इफेक्ट है, मेंटली आप अफेक्ट हो चुके हैं किसी की बात से, सो हाउ डू यू कोप विद दैट? पहली बात तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन कि हम ऐसा क्या करें कि हम वहां तक पहुंचे ही ना कि किसी के अल्फाज हमें ब्रेक कर सके। और अक्सर आप देखेंगे कि जिनके सबसे बेस्ट मैकेनिज्म इज टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर पीपल टेल यू is the projection of themselves in their mind, not the society and not the reality. अगर कोई आपको कह रहा है कि आप useless हो, deep down they feel that about themselves. It's not you. If somebody is telling you you're not pretty, deep down they feel that about themselves and वो आपको ये फील कराना चाहते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा जिन लोगों के ऊपर ये नेगेटिव वर्ड्स काम नहीं करते हैं, वो सामने वाला जो नेगेटिव होता है वो टूट जाते हैं। लाइक
कैसे इसको ये चीजें इफेक्ट नहीं कर रही हैं, एंड आई हैव दिस entire unconscious mind full of all these negative thoughts. ठीक है, एग्जैक्टली। एक बात तो ये है कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें इस लिहाज से कि जो लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इट्स मेरली द प्रोजेक्शन ऑफ देयर ओन सेल्फ। सोसाइटी में भी, किसी के सामने बैठे हुए भी और को भी आप अक्सर सोचते हैं कि ये एक इंसान ऐसी बात कर कैसे गया, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर ब्रेन, और दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ देमसेल्व्स इन दोज वर्ड्स। अक्सर बहुत से लोगों के इंटरव्यूज और opinions that strikes you a lot, and but that's the reality of them. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नजर आएंगी जहाँ पे आपको स्टॉप करना है, देन यू हैव टू टेल योरसेल्फ इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द अदर पर्सन जो आपको ये बात करे। फॉर इंस्टेंस, आप हमारी सोसाइटी में ये भी बहुत होता है, आप कहीं भी खड़े हो गए, लोगों को आपको बताने की बहुत जरूरत है एवी ओपिनियन देने की। दे विल कम एंड टेल यू जरा अच्छी नहीं लग रही ना, बहुत ओवर हो गया, यू नो, इस तरह की चीजें, शादियों पे अजीब चीजें, और पीपल हैव दैट, बट इफ यू डोंट हैव द रिस्पॉन्स, आप एंक्शियस हो गए हो, देयर गो द विन, वो आपके ब्रेन में पेनिट्रेट हो गया। बट द मोमेंट यू स्टॉप देयर एंड टेल देम, डू यू फील दैट अबाउट योरसेल्फ, ओ माय गॉड, आई डिडंट नो दैट, क्या हुआ, कम ऑन, लेट्स टॉक, व्हाट इज बॉदरिंग यू, चेंज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो भी आपको अटैक कर रहा है नेगेटिव वर्ड्स के साथ, उसका वो जो ख्याल है आपके लिए, जो उसने आपके बारे में जज कर लिया, असल में वो उनकी अपनी परसेप्शन है अपने बारे में। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है दैट somewhere I read this quote. It was about, I don't know something until I write it down. कि मेरी थॉट्स मुझे नहीं पता क्या है जब तक मैं उनके बारे में लिख नहीं लेता हूँ। और इसी तरह से आपने, शायद आप भी सजेस्ट करते होगे अपने हर क्लाइंट को, आई सजेस्ट देम टू कीप अ थेरेपी जर्नल फॉर देयर लाइफ। It should not be a sad journal, it should be a happy journal, what you did, scheduling, क्या खुशी, कैसा महसूस हुआ वो करते हुए, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, एवरी सिंगल थिंग। तो जब हम वो जर्नलाइज करते हैं ना, तो पीपल आर लाइक, एक ही सवाल ले लेते हैं अक्सर। मैं क्लाइंट को जब कहती हूँ कि हु यू आर, तो दे आर लाइक, मैंने कहा कि आपका कहाँ है वो, आपने जो मेरे लिए लेके आना था, लेट्स रीड इट आउट। एंड देन दे आर लाइक, मैं आपको बताता हूँ, मैंने सोचा होगा, नहीं सोचा होगा आपने, we are too afraid and scared to write down our thoughts, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा वो सब कुछ देखना और पढ़ना और सुनना और समझना और एक थॉट को गैदर करना। इसलिए बहुत ज़रूरी है, whatever you are thinking, write it down. It should not be for the clients who are just seeing therapy. This should be for everybody. I had the habit of writing journals since childhood. I don't know why I was doing that. Maybe one of my teacher told me and showed me a diary that was very cute with the key and the lock. And I was like, oh, I'm going to do that. I'm going to, put my thoughts into it. And I had a lot of them. Even I have it now. I write down everything in it, from the good quotations to the words to the budgeting to the success and failures, every single, and it makes me remember from here. हालांकि मुझे अक्सर दोबारा उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, but that made my memory very strong and I have everything stored in my mind. Journalizing is the another thing that आप अपने अल्फाजों को, अपने पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप सोच लो कि आई एम यूजलेस, अच्छा नहीं लगेगा लिख के, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। और वहाँ लिखना है, आई एम अमेजिंग, आई कैन डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई विल डू दिस, I am willing to change my future, I am willing to change my present, and I have the control over my life. I have the control over how I respond towards the people. दुनिया मेरे साथ क्या कर रही है, मेरा इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है, but how I respond towards the world is in my control. एग्जैक्टली। Journalizing, yes. यस। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स द एंड ज़ारा, अगर हम बात करें कि एज अ सोसाइटी, जैसे आपने कहा वी ऑल हैव ओपिनियंस और हमें ओपिनियंस देने की आदत भी बहुत ज़्यादा है, तो हाउ कैन वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स कि हम इस तरह से किसी को नेगेटिवली कुछ ना कहें, इंटेंशनली भी और अनइंटेंशनली भी, कि अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लें कि ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे कोई हर्ट हो सके। आई बिलीव थोड़ा सा नहीं, काफी करना चाहिए, बिकॉज life is uncertain, it's unpredictable, and
you might not end up, you don't want to end up being at a point जहाँ पे you were in a fight and you said something rude and miserable to somebody, even वो कोई stranger ही क्यों ना हो, right? Um, and it has to be about the conscious effort of what you have to say to the other person. अगर आप unconscious communication पे focus करते हैं, आपको ना तो communication का मजा आएगा, ना रिश्ते का मजा आएगा, ना आपको जिंदगी जीने का मजा आएगा. But when you consciously change what you say towards the other person, it actually have a lot of positive effect on you in your life. Have you heard about Steve Jobs? Yes. हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है all over the world, and he was rejected by his own company and friends and partners, but there was a time when he had this dream and people knew nothing about it, and he had, crowd full of room. uh, लोग उससे inspired थे because of the words, the personality, the tone of the words. अब्दुल सत्तार ईदी पे आंखें बंद करके लोग ट्रस्ट करते हैं. Why? ठीक है, इट वॉज अबाउट व्हाट आई से, आई स्टैंड बाय इट. आपके अल्फाज और आपके एक्शंस अलाइंड होने चाहिए. इवन इफ आप अल्फाजों में बहुत अच्छे हैं, लाइक ओ आई लव यू एंड आई ट्रस्ट यू एंड आई रियली वांट यू टू बी इन माय लाइफ, बट देयर नथिंग इन एक्शंस, जीरो. ठीक है, तो वो अल्फाज मैटर नहीं करेंगे. इट्स ऑलवेज अबाउट द कनेक्शन बिटवीन देम. तो इस चीज पे फोकस करना, और ये कॉन्शियसली होता है. इट कैन नेवर हैव एन अनकॉन्शियस बॉन्ड अनटिल एंड अनलेस आप इसमें मास्टर कर जाओ, ताकि आपकी पूरी पर्सनालिटी ही अनकॉन्शियसली इस तरह से बन गई है कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड वेयर यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर डूइंग. फॉर इंस्टेंस, now wherever I go, I can figure out that somebody's, have features of something and might be dealing with some problems. You just get that over the passage of time. But अगर आप consciously किसी चीज पे काम करते हो, फॉर इंस्टेंस आप गाड़ी चलाना सीखते हो, यू हैव टू फिगर आउट कि अच्छा गियर कहाँ है, कितना डिस्टेंस है, कॉन्शियसली. बट देन देयर कम्स अ टाइम आप अनकॉन्शियसली कोई भी रास्ता फॉलो कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, बातें कर रहे हो, you're doing a lot of things while driving. तो ये आपको स्टोर करने के लिए मेमोरी, और अनकॉन्शियसली अपने ब्रेन को चेंज करने के लिए आपको हर दिन कॉन्शियसली चेंज करना है अपने आप को. ज्यादा देर नहीं, इट शुड बी फोकस्ड ऑन वन डे एट अ टाइम. वन डे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेकर चलें कि आज के दिन में अपने कल से कितना बेहतर. नॉट अ बिग ठीक. गोल. Exactly. All right. So I have a question over here which says how to overcome our negative thought. Well, when you are thinking about negative things in your life and the people associated with it, or even about yourself, सबसे पहले तो अपने उन थॉट्स को लिखना शुरू कर दें. ज्यादातर सवाल होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों 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 क्यों, बहुत ज्यादा. आंसर इट. व्हाई इट हैपेंड विद यू. आंसर करें. आपकी सोच में ही जवाब है. यू नो, अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली यू नो इट. आप उसको आंसर करें, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आप सबसे बेहतरीन जवाब देखें. एंड नाउ, जब आंसर कर दिया, अब मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए, राइट? व्हाट शुड आई डू अबाउट इट? सो दैट्स द पॉइंट. इफ यू टॉक अबाउट प्रॉब्लम, नेगेटिव थॉट इज द प्रॉब्लम. ये विक्टिम लैंग्वेज है कि मैं, आई एम इन अ प्रॉब्लम. बट द लेजेंडरी एंड लीडरशिप लैंग्वेज इज, I have an opportunity to build and change and learn and grow. You can use it the way you want it. आप बैठ के उस पर अफसुर्दा हो सकते हो, या आप बैठ के उस पर काम कर सकते हो. कोई भी किसी किस्म की भी नेगेटिव थॉट, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, आप उसको चेंज कर सकते हो थ्रू योर रिस्पॉन्स टूवर्ड्स इट, बिकॉज यू हैव दैट इन योर कंट्रोल. और ये है हमारे कंट्रोल में. वी जस्ट नीड टू प्रैक्टिस दैट. बहुत से लोगों को नहीं पता, बट 70 to 80% कंट्रोल हमारी जिंदगी का हमारे पास है. And we can ठीक. change it. We can work on it. All right. All right. So that's pretty much all. I guess we've discussed a lot of major or the session went really well. Thank you so much for joining us, Zara, and thank you so Welcome. much light on so many important topics and so many important things. और I guess this was very useful for people जो देखेंगे, जो अभी लाइफ में देखे. अच्छा, we have another question if you'd like to take that. अच्छा, it says Why I yes, went went black. blank while writing journal. That is because we don't want to face negative thoughts and emotions. It will take a lot of time. It's not a one-day job. It's going to take a lot of days. In fact, जब आप वहाँ तक पहुँचो और लिखना शुरू करते हो. So start with easy things. इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें लिखना शुरू ना करें. आसान चीज़ लिखें.
maybe you can write down a recipe, maybe you can write down what you like, maybe you can write down about in the moment how you're feeling about it, right? um, okay, what do we have? Yeah, it says please answer Okay. questions of audience too. All right, so we'll just take few questions. अगर किसी का Okay. कोई भी question हो, तो please drop them in the comment box below so that Zara can answer that for you. How should we avoid toxic people in our life? Well, when you identify you have a toxic person in your life, you need to cut off all the ties from that person. Uh, One thing. The other thing is that you need to work on yourself. That what made you let that person, the toxic person in your life. You need to have proper boundaries that define you. और वो चाहे एक टॉक्सिक इंसान हो, दो हो, या आपकी जिंदगी भरी हुई है टॉक्सिक लोगों से, अगर आपकी हेल्दी बाउंड्रीज हैं और आप उनको रोज प्रैक्टिस करते हो, कोई आपके दिमाग के साथ नहीं खेल सकता, आपकी लाइफ के साथ, आपकी जज्बातों के साथ. इट विल बी परफेक्टली फाइन. यस, हेल्दी बाउंड्रीज. हम टॉक्सिक लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते या, बट वी शुड लर्न टू डील विद देम. दे दे विल कम रनिंग बैक. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? वैसे मेरे पास एक टास्क था अबाउट, आई डोंट नो, इट विल बी फन एंड क्वाइट ट्रिगरिंग टू, बट अगर आप लोग वाकई अपनी वर्ड्स को देखना चाहते हो और एनालिसिस करना चाहते हो, ट्राई टू डिवाइड अ पेपर इन योर डायरी और जर्नल, और उसमें लिखें लैंग्वेज ऑफ माई लैंग्वेज ऑफ बीइंग विक्टिम एंड माई लैंग्वेज ऑफ बीइंग अ लीडर. और आपको नजर आएगी वो चीजें कि मैं, मेरे लिए मेरी विक्टिम की लैंग्वेज क्या और मेरे लिए लेजेंडरी या लीडरशिप की लैंग्वेज क्या, आपको बहुत क्लियरली नजर आना शुरू होगा. एंड देन वो जो विक्टिम वाली है उसको क्रॉस करके यू हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग एवरी डे जो लेजेंडरी लैंग्वेज है. आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई एम केपेबल ऑफ वट एवर इट इज फॉर यू. तो आई थिंक ये टास्क बहुत अफेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज इट इज अबाउट वर्ड्स, इट इज अबाउट चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव डेली. Anybody have any question? We can Yes. do for like any 2 to 3 minutes. How to overcome negative thoughts. I think we did that. Yes. There's another question. Example दे दे victim and leader की एक. अच्छा, विक्टिम वाले लोग अक्सर कहेंगे कि I can't do this, I cannot do this. It's like they're choosing to be on the side of the world जहाँ पे बेबसी है, बेचारगी है, प्रोक्रेस्टिनेशन है और उम्मीद ही नहीं. क्यों? कुछ भी रीजन हो सकता है उसके लिए, बट दिस इज हाउ इट इज. ठीक है, लेकिन जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो उसमें ये है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझसे हो जाएगा, आई हैव लर्नड इट, आई कैन गेट द नॉलेज ऑफ इट, ओ यू नो, सॉल्विंग सम टास्क एंड एनीथिंग, आई कैन डू दिस. और हम कर सकते हैं. बहुत से सदियों में ये भी जनरेटेड था कि लड़कियां मैथ्स नहीं कर सकती, इंजीनियरिंग नहीं कर सकती, एंड वी हैव अमेजिंग इंजीनियर्स, अमेजिंग mathematicians who are female, who are scientists, who are doing amazing job. It society made you and wanted you to think about you can't do this, right? So it is about you have to change the words that I can do this, I have the power to do this, and people are doing that. People are changing the waves. I need an answer of a question, please. Yes, Duryab Uwais, you can ask. Uh, How can we boost our self-confidence? It's always about filling yourself with small tasks every day. अगर हम छोटे छोटे tasks से start करें हर दिन, it gives us a lot of motivation and confidence. दूसरी चीज़ ये है कि रिस्क लें जिंदगी के अंदर, माइल्ड रिस्क लें, नॉट जस्ट कि आंखें देखी और एक गैम्बल खेल लिया जिंदगी के साथ, नॉट दैट. माइल्ड रिस्क लें जहाँ पे आप श्योर हैं दैट यू नो दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. Build your social circle with positive people rather than people who let you down every time. और अगर ऐसा होता है तो उन लोगों से थोड़ा सा वास्ता रखें, because you have the choice to do that. किसी भी सिचुएशन में आप चूज करो, और अगर आप नहीं भी कर पाते हो and you're forced to be in a situation where you are surrounded by people who can affect you mentally and physically, तो आप
अपने माइंड को ब्लॉक कर सकते हो उनके अल्फाजों से, एंड उस वक्त आप अपने आप को बता सकते हो कि ये इंसान अगर मेरे लिए मैटर नहीं करता तो उसके अल्फाज भी नहीं करते हैं. Do you are aware how can we set our work boundaries? How can we treat such people who overburden some themselves in return they don't get the response? Then they become disappointed. How to cope with it? Okay, first thing is, अगर तो आपकी जॉब है 9 to 5, फॉर इंस्टेंस लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, और उस 9 to 5 जॉब की आपके पास एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, मेरे से 40 to 50,000, और आपके जो पर्टिकुलर काम था और प्रोटोकॉल था जिसके ऊपर पूरे आपके सिग्नेचर हो या साइन जो भी था, उसके अंदर आपको बताया गया कि यही वर्किंग आवर्स है, इसके बाद हम आपसे काम नहीं लेंगे. बट इफ आपके 5 बजे के बाद भी आपको रोका जा रहा है, आपसे काम लिया जा रहा है, आपको घर जाके काम करना जा रहा पड़ रहा है, यू हैव टू ब्रिंग बैक दैट आर्टिकल ऑन द टेबल, और आपको बताने की जरूरत है अपनी कंपनी को, दिस इज नॉट गोना हैपन, दिस इज नॉट व्हाट आई साइंड फॉर. इफ यू डोंट डू दैट, इट इज एंड विल बी ऑन यू, बिकॉज आप अपने लिए स्टैंड लिए, और कंपनी कभी भी नहीं समझेगी उठाने की, क्योंकि उनको कभी किसी ने कहा ही नहीं उठ के कि ये नहीं करना है. ठीक है. दूसरी चीज, लोग आपकी बाउंड्रीज को तब रिस्पेक्ट करते हैं जब आप अपनी बाउंड्रीज को प्रैक्टिस करते हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते हो और कोई आपको कहता है कि लेट्स गो, वील हैव फन एंड दिस एंड दैट, और आप कहते हो कि अच्छा चलो लेट्स, आपने गिव अप कर दिया, सो दैट मीन्स कि आपकी जो वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो बाउंड्री थी अपने आप को लेके, दैट इज वीक. यू हैव टू मेक इट पर्टिकुलर ताकि लोग समझ सकें उस चीज को. फॉर इंस्टेंस, आई हैव रियली गुड बंच ऑफ फ्रेंड्स एंड वी हैव पर्सनल बाउंड्रीज इन दैट. फॉर इंस्टेंस, अगर मेरा दिल नहीं कर रहा है किसी सोशल गैदरिंग में जाने का, आई टेल देम राइट ऑफ आई कैन नॉट कम, एंड दे आर लाइक ओके, मीट यू नेक्स्ट टाइम. सो that's it, because they know I made that decision and they respected it. इसलिए नहीं कि वो करना चाहते, it is because I started respecting my decisions and my boundaries. आप जैसा सलूक अपने साथ करते हो, दुनिया आपको उसी तरह से परसीव करती है और वैसे ही आपके साथ बिहेव करती है. इन केस ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, कॉन्फिडेंट, आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, तभी लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे. ऑल्सो, यू डोंट नीड टू टेक लोगों के काम अपने वर्क प्लेस में जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हूँ और मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ, क्योंकि जो सबके लिए अवेलेबल होता है वो इनविजिबल हो जाता है, तो आप अपने डिजायर्ड गोल पे नहीं पहुंच पाओगे. How can they balance their work life and private life? Okay, what happen is कि एक तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बहुत से लोगों के साथ कि हम अपनी वर्क लाइफ और प्राइवेट लाइफ में काम नहीं कर पाते हैं, दैट इज ऑल्सो इन कम्स विद द बाउंड्री. क्योंकि आप चूज करते हो कि अच्छा ठीक है, अगर मेरे घर के बाहर भी किसी ने मुझे अप्रोच कर लिया है फॉर द वर्क, एंड यू लाइक ओके कर लेते हैं. व्हाई यू डोंट हैव अ पर्सनल लाइफ? अगर नहीं भी है, फारिग भी रहना है, तो व्हाई गिव योर टाइम टू समबडी जस्ट लाइक दैट. ठीक है, ये नहीं करना है. हेल्दी बाउंड्रीज लिखिए अपने बारे में, लिखिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मैं किस चीज से आवाजार होती हूँ, मैं किस चीज से ठीक रहती हूँ. राइट डाउन अबाउट दैट एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट. So it means we should blame them. We have to change ourselves. We don't have to blame anybody, but yes, set your boundaries and start on growth and focus. Exactly, we should get ourselves busy with something else. That's avoidance, but let's start with the idea. Maybe आप थोड़ा healthy boundaries के बारे में पढ़ें और अंडरस्टैंड करें, और शायद आपको एक आइडिया हो कि एक जिंदगी में सेट ऑफ रूल्स और बाउंड्रीज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. फॉर इंस्टेंस, पूरी दुनिया बाउंड्रीज पे चल रही है, रूल्स पे चल रही है. अगर आप नेचर को देखें, एक टाइम है सुबह का, रात का, एक टाइम है नेचर चेंज होने का. Now that there is global warming, we are responsible for it. But again, हमने जब रूल्स को मैसअप किया नेचर के, तो ग्लोबल वार्मिंग का इशू आ गया, बिकॉज वी चेंज द बाउंड्रीज, वी चेंज द रूल्स. इसी तरह से हर घर के अपने रूल्स होते हैं, हर रिलीजन के अपने रूल्स होते हैं, हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट देम बिकॉज वी हैव टू. ठीक है, बट द मोमेंट हम उन रूल्स को ब्रेक करते हैं, चेंज करते हैं, हाँ हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं,
बदल सकते हैं, आगे की जनरेशन के लिए रूल्स बदल ले जा रहे हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो अप्लाई भी नहीं करने चाहिए। बहुत से, आप इंग्लैंड की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो अभी भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर देयर। इसी तरह से हमें उनको, वी कैन चेंज देम एंड मॉडिफाई देम, बट अगेन वो जो रूल्स है ना वो हम ही बनाते हैं, हर जगह के अपने अपने रूल्स हैं। अपनी जी जिंदगी के रूल्स क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम लोगों को कहते हैं कि उनको ये करना चाहिए था, उनको ऐसा कहना चाहिए था, क्यों, किसने कहा है? ठीक है, तो व्हाई आर यू डूइंग दैट टू योरसेल्फ? अपनी क्या बाउंड्रीज है, उसके ऊपर काम करना है। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन, दिस इज समथिंग, व्हाई आर यू सो क्यूट? थैंक यू। गिव सम टिप्स ऑन हाउ टू ओवरकम एंजाइटी। अच्छा, एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए एक तो सबसे पहली बात है कि जब एंजाइटी साइकोलॉजिकल होती है तो हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं सिचुएशंस को जो हमें एंजाइटी की तरफ लेकर जाती हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो एंजाइटी फिजिकल सिम्टम्स भी लेकर आना शुरू हो जाती है। इट कैन बी एनी सिम्टम फ्रॉम ट्रेमरिंग, शेकीनेस, लॉस ऑफ ब्रेथ, a lot of urination, diabetes हो जाना, blood pressure हो जाना, codependency, it can be anything. You name it, and there are a lot of mostly physical problems. They do come from anxiety. अच्छा, इसको खत्म करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम है कि आप अपनी मेंटल एंजाइटी को तब कंट्रोल कर सकते हो जब आप फिजिकल एंजाइटी को कंट्रोल कर देते हो। एक्सरसाइजेस, परफेक्ट स्केड्यूल, हेल्दी फूड, 8 hours ऑफ स्लीप, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज जस्ट नॉट द वाटर। अक्सर लोग बहुत ज्यादा एक्सेसिव पानी पी लेते हैं, दैट इज डेंजरस। It can be about juices, it can be about, staying hydrated, be in a sauna and steamed, it could be anything. Avoid the expensive stuff, ठीक है। लेकिन उसके बाद एंजाइटी, आप अपने सेफ पीपल के साथ बैठना शुरू करें, कंफर्टेबल पीपल के साथ बैठना शुरू करें अपनी जिंदगी के अंदर। ट्राई टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। डीप ब्रीदिंग इज a very common and cliche thing asked from every client to do, but बहुत से लोग ये नहीं कर पाते हैं। It is tough because controlling your breathing level and connecting it with your brain, your sensations, everything, it is a tough job. But yes, again, with practice you can achieve that. It stops you from anxiety. दूसरा, अक्सर लोग पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक की तरफ चले जाते हैं। फिजिकली अपने आप को रियलिटी में लाने के लिए यू कैन टेक एन आइस पैक, अपनी गर्दन पे रखें, यू विल कम बैक टू द रियलिटी, और आपको वो साइकोलॉजिकल पेन हर्ट नहीं करेगा उस वक्त। फिजिकली आप अपने आप को वापस ले आओगे। द अदर थिंग यू कैन डू इज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। दिस इज अ स्टेप ऑफ 5 to 1, like activating your senses. Anything, 5 things you can see, 4 things you can touch, 3 voices you can hear, 2 things you can smell, 1 thing you can taste. It's about activating your 5 senses. और अक्सर हम एंजाइटी का शिकार इसलिए हैं क्योंकि हम अपने प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। वी आर थिंकिंग अबाउट ओ व्हाट विल हैपन, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट हम कहाँ पे हैं, क्यों हैं और क्या हो रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सी टास्क हैं, आपको बहुत सी प्रैक्टिसेस खुद भी मिल जाएंगी अगर आप ऑनलाइन इसके बारे में। वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। One of my friends does this all the time. She's also watching your sessions. That's why asking these questions might be helpful. Okay. She badly needs. Okay. Sometimes resistance and clinging yourself with a feeling also gets you burned out. Even if there is nothing to worry about, we still feel mentally. Yeah, because if you are in a clinging relationship, that needs to be changed because इट्स अबाउट इनसिक्योरिटी इन अ रिलेशनशिप। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज एक रिलेशनशिप की, दोस्ती की, यकीन और इज्जत होता है। बट जहाँ यकीन नहीं है वहां पे लोग क्लिंगी हो जाते हैं। अटैचमेंट इश्यूज हो सकते हैं, relationship problems before trauma bonding, it could be codependency, it could be anything, and that's something serious. Maybe you can have a session or two with someone to work on it. Dear friend, hope you get very well. Okay, that's it for today, I think. yes, that's it. And thank you so much for answering so many of the questions, and thank you so much. Welcome. It was a great session and I'm pretty sure कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें आज सीखने को मिली. Thank you so much for that. And we'll be coming back. Welcome. Alright, so the listener.pk will be coming back with another very interesting topic next week. Till then, stay tuned. Take care of yourself mentally and physically as well. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.